My husband is going to wait for his life for me to get ready. Eid Mubarak! That was so fake. I just woke up. मैं 1 बजे उठी थी, मैंने सबके मैसेजेस का रिप्लाई किया और मैं दोबारा सो गई और अब 2:30 बज गए हैं और मैं अब उठ रही हूँ। खैर एनीवेज, ईद को हम शुरू करते हैं छुआरे खाकर। एक और खाऊंगी। लास्ट वन, प्रॉमिस। So after 30 days of wait, my bed tea is finally here. Let me go freshen up. ये देखिए, ये सोते हुए हाल हुआ है। आजकल की मेहंदियाँ ऐसी हैं कि हर वॉश में कलर तो उतरता है, साथ में अगर आप उतार कर सो भी जाओ तब भी आपका कलर उतरता रहता है। वाओ। Cause something sweet is mandatory. शेर खुरबा। ईद मुबारक। So now I'm gonna get ready. So let's go. Hair straight करेंगे, लेकिन उसके लिए हेयर प्रोटेक्शन स्प्रे इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन मेरी स्प्रे बॉटल ख़राब हुई है और पाकिस्तानी कोई जुगाड़ लगा ले। So let me just क्या बोला? ये हमेशा खुल जाती है और बंद भी नहीं होती। कर मेरा स्ट्रेटनर जो है वो आखिरी सांसें गिन रहा है। अब ये देखें, ये भी जुगाड़ लगाया हुआ मैंने। तो आई नीड टू अपग्रेड माई सेल्फ। ओके, सो मेकअप में मेरा फर्स्ट स्टेप जो होता है वो लेंस होता है, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट लेंस है वैसे भी। और मेकअप से पहले ज़रूर पहनना चाहिए वो, इसलिए क्योंकि जो फेस पाउडर होता है वो अक्सर आपकी आइज़ में जा सकता है और फिर जब आप लेंस पहनते हो क्योंकि वो लेयर आ जाती है तो वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो दैट्स वाई आई प्रेफर टू वेयर लेंस प्रायर टू माई मेकअप। सो लेट मी जस्ट have to clean the lens with the solution first. Shit, मेरा ना मेहंदी का कलर बार बार उतर रहा है और इस पे ना अब लग जाए। वाओ वाओ। सबसे पहले जो मॉइस्चराइज़र, बिकॉज इट इज़ वेरी 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 नेसेसरी। और मेरे घर में ईद ऐसी हो रही है दैट माई पेरेंट्स आर स्लीपिंग एंड आई एम गेटिंग रेडी, और मैं मामा को उठाऊँगी और मामा से कहूँगी कि उठे और मेरा शूट करें। देन सन ब्लॉक, बिकॉज इट्स इवन मोर नेसेसरी देन द मॉइस्चराइज़र। और ये देखिए मेरी बाली फिर से खुल गई है। मैं केक क्या नहीं भूलना गाइस। देन ऑफ कोर्स द प्राइमर, क्योंकि जो स्किन पोर्स होते हैं वो मेकअप क्लॉग कर देता है और मैं नहीं चाहती कि मेरी स्किन ख़राब हो मज़ीद, तो इसलिए प्राइमर अगेन ऑन द नेक टू। जो भी आपने फेस पे अप्लाई करना है अपने नेक पे भी अप्लाई करना है। मेरे मेकअप स्टेप्स थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं सबसे। सब कहेंगे ये भी करते हैं वो भी करते हैं, ये चाहता है, ये स्टेप नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है। आई डोंट केयर। ओके, सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई द कंसीलर। ओके, सो नाउ द फाउंडेशन, आई मीन द बेस। इसके बारे में आई एम ऑलवेज कन्फ्यूज्ड कि मैं ब्लेंडर से इसको करूँ या फिर इसको ब्रश से करूँ। आई मीन, बोथ वर्क फॉर मी।
Oh my god, it looks like that I have got chicken pox. Allah ना करे वैसे. यार ये मैं उतार ही देती हूँ. मुंडी बन गई हूँ. ब्रश ब्लेंडर सब अपनी जगह है, लेकिन हाथ का कोई मुकाबला नहीं. No? Now it's time for the eyeshades. मेरे से इसमें देख के बिल्कुल नहीं होता मेकअप है. मैं आईशेड्स बहुत कम लगाती हूँ, बहुत कम. कोई शादी हो या ईद हो या कोई बहुत स्पेशल इवेंट ओकेजन हो तब मैं लगाती हूँ. अदरवाइज इट्स जस्ट अ लाइनर एंड अ मस्कारा. मैंने आउटर पे किया है. दिस इज अनदर पैलेट दैट आई हैव. दिस द लिक्विड वन. I'm just going to smudge it all. Eid Mubarak! Bye bye. मेरे काम चेक करें. लाइनर में कोई और यूज़ कर रही हूँ, ब्रश में किसी और लाइनर पे यूज़ कर रही हूँ. वाओ. A little tap around my eye area. Now contouring. Nose contouring. There is tint. The nose, just a little. Now the highlighter, of course. Just on this part as well, and on the upper side too. I really don't know what it is for. मुझे तो बस मज़ा आता है करते हुए, so I just do it. I know what it is for, but you know आप हाथ से भी कर सकते हो. ये देखो हो गया सब. What's I need to brush it, man? So जब तक मेरे कपड़े प्रेस हो रहे हैं, I thought कि मैं nail paint लगा दूँ. So yeah. I'm not going to move the camera, okay? This is going to be the location for today's vlog, okay? So my nail paint is done. Dun, 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 dun. And now I'm going to change. So I have changed, and let me just apply the lip color. मैंने पहले ही lip balm Vaseline apply कर ली थी, लेकिन just another layer on the lips. So I can't decide which one is better. I guess the little ones. Now it's time for the bangles. ये जो कलर है ना, मैच नहीं कर रहा था. I swear to God, मैंने बहुत ढूंढ लिए, नहीं मिले मुझे. But still. My husband is going to wait for his life for me to get ready. ऊपर नीचे क्यों हो रही है? And the hair serum. And then the dupatta, जो कि मैंने डाई करवाया है क्योंकि इस कलर में कुछ नहीं मिलता. Okay, so I am ready. It's all from my side for today, and it has been a great day क्योंकि मैं तैयार हुई हूँ, and it's the first vlog from my side on Eid. So
So it has been a wonderful day and I love my mehndi, by the way. So subscribe my channel, like, comment and share this video with your friends and family, and I'll see you guys in my next vlog. Till then, Allah Hafiz, take care, and yes, Eid Mubarak once again. ऑल्सो गाइज, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि मेरा नेक्स्ट व्लॉग किस बारे में होना चाहिए, और कल मैं इंस्टाग्राम पोल भी लगाऊंगी जहां पर आकर आप लोग अपने व्लॉग आइडियाज़ मुझसे शेयर कर सकते हैं. माई इंस्टा हैंडल इज़ ईशा रज़ा _ विच इज़ मैंशनड राइट हियर. टिल देन, बाय.